you have some questions which are 3 marks, 5 marks, and उसमें भी आपके पास there are a few questions which are actually from diazonium salt, and there are few questions from the chemical reactions of amines also. Okay, so chemical reactions of amines, chemical reactions of any of the, whether it is haloalkane, halorine, alcohol, phenol ether, or aldehyde ketone carboxylic acid, the chemical reactions are the most important sections जहां से आपको maximum number of questions आएंगे. But still, you cannot ignore the classification, you cannot ignore the nomenclature, you cannot ignore the physical properties. ठीक है? So you cannot ignore these topics because these are easily scoring topics. ठीक है? तो ज्यादा मार्क्स नहीं आते, बट यहाँ से सवाल जरूर आते हैं. तो चलिए, looking at the first question for amines. Now the first question will be, एक second. Okay, fine. Let us do some nomenclature and classification problems. Although recently, after the pattern change, there has been no questions from these topics. These are questions from 20. बस मतलब ये 1 mark question आया था term 2 में, and these are all previous year questions जो pattern change होने से पहले की बात है. Even 2021 to 22 was not a similar pattern as we are having right now. They're asking choose the primary amine from the following. So I will label it as A, B, and C. You can tell me in the chat which of the following is primary amine. A, B, or C. 1 minute for you guys. Okay, Ram. If you're done with the first question, you can start with the second question, third question, and so on. Just 1 second. Let me reshare my screen. Okay, Yusuf. I'm waiting 30 more seconds. Yes, Fadil, okay. Twenty more seconds. Okay, the time is up. So a very basic way of identifying primary, secondary, and tertiary is you don't look at the alkyl groups, rather you look at the hydrogens. That will be much easier. So if nitrogen, it has 2 hydrogen, then it is going to be 1 degree. And if nitrogen, that means you will have something like this. Agar NH2 laga hua hai, you have anything which is bonded with NH2. Okay, if you have NH2, that means it is 1 degree. If you have NH, that means it is 2 degree. And when you have no alkyl groups, sorry, no hydrogens, only alkyl group, it is 3 degree. So 2 hydrogen means 1 degree, 1 hydrogen means 2 degree, 0 hydrogen means 3 degree. And here we have NH2 in the A case. So A is your primary amine. Now moving on, the nomenclature part. The IUPAC name of this compound, so you make it properly first of all. So you'll have CH3 that is bonded to nitrogen, and this nitrogen has CH2, CH3, and one more CH2, CH3. So if you guys remember, we have done this type of same nomenclature in the class also. Here, first of all, you will see there is no functional group, there is no unsaturation. You directly can choose the parent chain. So the most number of carbon atom is 2 carbons. So this you can choose as parent chain. Now this is your parent chain. That means it is what? It is ethane. And what is attached here? So you have, oh no, we have a functional group that is amine, right? Wait a second. Let me move like this. There is a functional group, no? Functional group is amine because nitrogen is attached. Unsaturation is AN because there is no double or triple bond. The parent will be eth because here we are having maximum of 2 carbon atoms attached with nitrogen. Nitrogen is attached with 1 carbon also, and it is attached with
two groups which are two carbons, so you can choose any one of them. And when I talk about substituent, so we have CH3 and we have ethyl. So we have methyl as a substituent and we have ethyl as a substituent. Both the methyl and ethyl, they are connected with nitrogen, so it will be written like this, N and N. So you'll have N ethyl according to alphabetical order, N methyl ethane amine, like this. Okay. Since these ethyl and methyl groups, these are not attached with any carbon atoms, it is attached with nitrogen. We number it using nitrogen. I write the structure of 2,4 dinitrochlorobenzene. I hope these things are not very tough for you guys. You'll make a benzene ring. This is question number what? This is question number 2. This is question number 3. You have chlorobenzene. So chlorobenzene is Cl here, and it is having 2,4. So this is the second position. And here you have the fourth position, and both of these are having NO2 groups like this. NO2. Write the IUPAC name of the following. Here you have CS3, NH, and CS3 hold twice. So you can name this like this. You have CS3, nitrogen that is connected with one hydrogen, which is having one carbon atom, saying one hydrogen. It is connected to one CS3 and it is connected to another CS3 like this. Okay. Now here also the max. See, if you look at the carbon atoms, then I have 3 carbon atoms chain. Na? There are 3 carbon atoms. Okay. And here it is your functional group amine. So functional group, it is going to be amine. Unsaturation is going to be AN. The parent is going to be prop. And then you have substituent, that is a methyl. 1, 2, 3. So amine is in the second carbon atom. CS3, it is in the N, that is nitrogen. So the name will be N-methyl propane 2-amine. Okay. So this is how you are going to name it. What about the name of this compound? So it is an aniline. If you look at the base benzene derivative that we are having, this is aniline, and it is having 3 bromine atoms attached to it. So it is going to be 2, 6 tribromo aniline. Okay. So this is all about nomenclature. I hope इतना आप लोग के लिए काफी होगा about nomenclature. Now moving to preparation of amine. There is a question that is quite important, जो थोड़ा एनसीईआरटी से उन्होंने आगे पूछ लिया है ना. Even though by elimination method you can solve this MCQ, लेकिन this was asked this year. Which of the following would not be a good choice for reducing nitrobenzene to aniline? So this is the first method of preparation we do. Nitrobenzene से कहाँ जाते हैं हम लोग? Aniline, है ना? So we have aryl, or you can have alkyl nitroalkanes, and you can convert it to aryl or alkyl just connected with NH2. ठीक है? Aromatic or aliphatic nitro groups or compounds having nitro groups will be can be converted to alkyl or aromatic aryl amines. And what are the reagents we use? We can use here H2 in the presence of nickel. We can use Fe and HCl, and we can use Sn and HCl. But we don't use a reducing agent, that is lithium aluminium hydride. Okay? This agent is not used. Now, why it is not used? The reason is that if you are going to use lithium aluminium hydride, then it is going to give you a azo compound. So here they are saying you have nitrobenzene. The nitrobenzene will be like this. Now, when you are going to use lithium aluminium hydride, we are expecting lithium aluminium hydride uh, to reduce this nitro to aniline, but what it does, it actually gives you a azo compound. Okay? So when you are having lithium aluminium hydride, yeah. So it is going to give you, please write it here.
benzene ring connected to a nitrogen atom, which has double bond with nitrogen atom, and then again a benzene ring, like this. Okay. So that is why it is not a good choice for reducing nitrobenzene. Lithium aluminum hydride is not a good choice. So E option is correct here. You can write this reaction as of now. Moving on. Another question is ammonolysis of alkyl halide is not a suitable method of preparation for pure primary amines. Ammonolysis of alkyl halide yields mainly secondary amines. Try to answer this one. Again, true false type of thing, right? True false. What about the assertion question? The statement that is present in the assertion, is it true or false? Tell me in the chat. Okay, fine, Shahid. I'm waiting for others. The assertion is okay, Iram. What about others? Yusuf, Deborah, Fadil, Mariam Khatun, Safia. You can answer at least these things, ना कि assertion true है या false. If you're not going to participate, क्या फायदा फिर? बताएं. Assertion is true or false? Okay. See, this is true statement. What about the reason statement? Is the reason correct? So choose the option, Iram. A, B, C, D में कौन सा option होगा, Iram? Yes, very good. ठीक है. Ammonolysis, it gives what? Mixture of product. It does not give you mainly secondary. This is false statement. ठीक है. So the only option is the C option. ठीक है. जब रीजन अगर फॉल्स आ जाए तब तो आपको ए बी ऑप्शन बचा ही नहीं, आपको आगे सीधा सी कर देना है. ठीक है, चलिए. Now moving on to another question. CH3O, CH3CONH2 reaction with NaOH and Br2 in alcoholic medium gives. Okay, Shahid. What about others? I need answer in like 1 minute. Just giving you timer. You know, 1 minute timer आपको समझ में नहीं आता. I will give it 30 seconds timer. And let me see if there can be. 30, 29, 28, 27, 26. सिर्फ प्रेशर बिल्ड होता है आप लोग को, है ना, वो 24, टिक टिक 1 टिक टिक 2 वाला. 21, 20, 19, 18, 17. Answer guys, answer. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. किसी का आंसर आया? हाँ, कुछ लोगों का तो आंसर आया. Just give me a second, guys.
ओके, सो कुछ आंसर्स आए हैं, बी, 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 सी। ओके फाइन, दिस इज हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। सो यहाँ पे यू विल गेट दिस CO इज रिमूव्ड, और आपके पास जो कंपाउंड है वो मिल जाएगा। आपके पास RCONH2 है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, दिस इज अमाइड ना, तो NaOH या KOH भी हो सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ Br2। ये CO बस निकाल दीजिए, यू विल गेट RNH2। ठीक है, सो व्हाट इज द R हियर, इट इज CS3। CS3 मतलब बी पार्ट। ठीक है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ मूविंग ऑन, is there any MCQs that we can have? Moving on. सवाल कीजिए। Now we have already seen this. Monolysis of alkyl halide is not a good method to prepare pure primary amines. Why? Because it gives mixture of 1 degree, 2 degree, 3 degree, and quaternary ammonium salts. चलिए, what about the 12th one? A and B. A and B. Yes, Shahid, correct. Very good. Chaliए, 30 more seconds, guys. You can send the answers on my WhatsApp. 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24. Yes, Deborah, that is correct. 22, 21, 20, 19, 18. Try to identify the B. 17, Yeah, 16, that's fine, correct. 15, 14, 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Okay, see here, guys. The first structure is you have CH3, CONH2। ये आपके पास बेस है, और ये आपके पास क्या है, एसिड। एसिड बेस रिएक्शन जब होगा, देन इट विल फर्स्ट ऑफ ऑल गिव यू अ सॉल्ट। उसके बाद आप जब हीट करेंगे तो वहां से यू विल बी रिमूविंग द वाटर मॉलिक्यूल एंड यू विल हैव CH3CONH2, एंड दिस इज द ए स्ट्रक्चर। और इसको व्हेन यू आर राइटिंग NaOBr, सो NaOBr क्या है, इट इज सोडियम हाइपोहैलाइड व्हिच इज फॉर्म्ड व्हेन यू रिएक्ट NaOH एंड Br2। ठीक है, सो इट इज सेम थिंग, दैट इज हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन का ही रिएजेंट है। सो यू विल गेट CH3NH2। फाइन। Then they are asking carry out the following conversion, that is from benzoic acid to aniline। अच्छा, ये सवाल क्वेश्चन नंबर, this is 12, this was 11, and this is 13। Benzoic acid is benzene ring having COOH,
So if, and we have to convert this to aniline. Aniline is having benzene ring and an NH2. So as you know that we are having one carbon atom less, so I will first of all use NH3 and heat to get an amide, C double bond O NH2, and from amide to aniline I can remove the CO by using NaOBr or NaOH in the presence of bromine. Okay. Hoffman bromide degradation. So either this reaction or this reaction, Hoffman bromide degradation, we have just seen. How will you convert ethane nitrile to ethane amine? Ethane nitrile is CH3 CN. Nitrile group, 2 carbon atoms, to ethane amine. CH3 CH2 NH2. So यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन दोनों में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है. दिस इज व्हाट इट इज अ रिडक्शन रिएक्शन. रिडक्शन के लिए हम लोग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज कर सकते हैं, LiAlH4. दैट्स इट. डायरेक्टली वी कैन यूज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. This is question number 15. No. Try the 16th one. Sixteen में A और B बताएं. I think you can answer it on the Zoom chat or WhatsApp, whatever you like. I don't think it should be a bigger problem. 16 वाला होना चाहिए. Let us take 60-second timer, है ना? No sound. I need sound. Without sound, with voice countdown. Yes. 60, 59, 58, 57, 56, Yes, 55, Shahid, that is correct. 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, Got something 40, on WhatsApp? 39, 38, 37, 36, 35, Yes. 34, Very good, Mariam. Very good. 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, Oh. 25, 24. Yes, Deborah, first one is correct. A is fine. 21, Iram, A is right, but 19, 18, B सही नहीं है. 17, देखिए जरा. 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. चलिए, उतना इफेक्टिव नहीं है. 1 minute टाइमर इज नॉट वेरी इफेक्टिव. 30 seconds वाला ज्यादा उसमें प्रेशर बनता है. खैर, नो, ऑक्सीजन कहाँ से आएगा इरम? ठीक है ना, तो थोड़ा सा ध्यान से आप, ठीक है, यू आर अप्लाइंग सम लॉजिक, दैट्स फाइन. लेकिन देखिए यहाँ पे यू हैव CH3Br, इट विल रिएक्ट विद CH3Br, इट विल रिएक्ट विद KCN और आपको CH3CN मिल जाएगा. ठीक है, अब ध्यान दीजिए जरा. The same logic you have to apply. You have carbon triple bond nitrogen and LiAlH4. LiAlH4 is a reducing agent, and आप सही बिल्कुल आपका जो आ रहा है ना, I understand it is coming from the carbonyl compounds. Because carbonyl compound में जब आप lithium aluminum hydride use करते हैं LiAlH4, then what happens? Carbon gets hydrogen and oxygen को भी hydrogen मिलता है. तो आपको क्या मिलता है? 2 bond as it is and hydrogen, and you get OH here. सेम चीज यहाँ पे की है ना. लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का क्या है? अल्कोहल बनाना काम नहीं है, उसका काम है हाइड्रोजन देना. सो अगर वो हाइड्रोजन देगा तो कार्बन को हाइड्रोजन मिलेगा, नाइट्रोजन को हाइड्रोजन मिलेगा, एंड यू विल गेट CH3 CH2 NH2.
और आई थिंक अभी हम लोगों ने ये सेम चीज किया था, वो तो स्क्रीन में भी दिख रहा है, फिर भी आपसे ये आंसर नहीं दे रहे हैं। गॉट द सेरम? Yeah. ठीक है, चलिए। आप यही लगा, आई थिंक यू आर अप्लाइंग दिस लॉजिक राइट, कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से अल्कोहल बनता है। Yes, sir. हाँ ठीक है, चलिए वो ठीक है, बट कार्बन है, नाइट्रोजन है, तो दोनों में हाइड्रोजन लगा देना है ना। नाइट्रोबेंजीन तो एनिलीन, यू हैव जस्ट सीन दिस, यू हैव नाइट्रोबेंजीन से आपको एनिलीन बनाना है, NH2, then you can use here Fe in the presence of HCl, ठीक है। इथेनोइक एसिड से मीथेन अमीन, so you have ethanoic acid, that is CH3COOH, you have to make methane amine, that is CH3NH2, one carbon atom only. So first of all you will have to make amide, that is CH3CONH2, and from here you have to make amines. You will get this by using NH3, and heat you will get this by using NaOH in the presence of Br2. Okay, देखिए मोर एक्सप्लेनेशंस रिगार्डिंग कन्वर्जन्स विल कम इन द कन्वर्जन्स क्लास, जब कन्वर्जन का हम लोग स्पेसिफिकली क्लास लेंगे। एंड देन यू हैव, देखिए नेम रिएक्शंस तो आप लोगों को याद रखना होगा ना, नेम रिएक्शन के लिए हम प्रैक्टिस यहाँ पे नहीं कराएंगे, बट यू हैव टू हैव अ लिस्ट ऑफ नेम रिएक्शन अकॉर्डिंग टू द चैप्टर्स नेम। जैसे कि इसमें इंपॉर्टेंट रिएक्शन हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, देन यू हैव गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, ठीक है। सो दीज रिएक्शंस, जो भी नेम रिएक्शंस वो आप याद रखिएगा, ठीक है ना, यू हैव टू रिवाइज इट ऑन योर ओन, इसका दैट आई विल नॉट डू हियर। And then we have physical properties, ठीक है। physical properties से there will be a lot of questions, so let us see physical properties. बहुत सिमिलर टाइप के फिजिकल प्रॉपर्टीज वगैरह से सवाल होते हैं। तो इफ यू कैन सी द 21st क्वेश्चन, इट इज सेइंग out of CH3NH2 and CH3OH which has higher boiling point, बस। so you don't have to answer why, है ना। तो obviously यहाँ पे किसका ज्यादा होगा, CH3OH is going to have higher. You don't have to answer why, but हमें तो बताना पड़ेगा, because due to better hydrogen bonding. Why better hydrogen bonding? Due to more electronegativity of oxygen atom. These points I have written in the notes. Arrange the following compounds in the decreasing order of their boiling points. So सबसे पहले we will see the compounds. So this compound butanol, it is alcohol. This is amine and this is alkane. ठीक है। So सबसे इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड दो में है, अल्कोहल और अमीन में हाइड्रोजन बॉन्ड है, एंड ब्यूटेन इज नॉन पोलर, सो ब्यूटेन विल बी लीस्ट। तो आपके पास जो ऑर्डर होगा डिक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे ज्यादा होगा अल्कोहल का, बिकॉज इट हैज अ better hydrogen bonding, that means you will have butanol followed by butanamine followed by butane. Butane will have the lowest. Then they are asking propane amine and dimethylamine contain same number of carbon atom even though propanamine has higher boiling point than and dimethylamine, ठीक है। तो इसका आप लोग चलिए रीजन बताइए। These all of these questions are same. Primary amines have higher boiling point than tertiary amine. Out of primary amine and tertiary amine, CH3 whole thrice N, which has higher boiling point. ठीक है, तो एक वर्ड में आंसर बताइए, why primary amines have higher boiling point than tertiary amines? 23rd नंबर। अब यहां से आप देख सकते हैं 2019 में, 2016 में, 2014 में, और फिर ये सेम सवाल 2014 में, एंड देन यू हैव 2020 में। तो इस तरह के सवाल आपको एक्सपेक्टेड हैं थोड़े से, ठीक है। चलिए, प्लीज आंसर इन वर्ड व्हाई टर्शियरी अमीन्स दे हैव हायर, सॉरी दे हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन दैट ऑफ प्राइमरी अमीन्स, ठीक है। 30 सेकंड्स फॉर दिस। 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, Not exactly correct. 4, 3, 2, 1, 0. See here guys, नहीं नहीं, वो सही आंसर नहीं है। देखिए ठीक है, you're in the right direction,
But when you have tertiary amine does not have any hydrogen bond because it does not have any hydrogen. Sorry, alkyl group, and alkyl group. See, so 3-degree amines cannot form hydrogen bond due to absence of nitrogen and hydrogen. ठीक है, due to absence of NH bond. ठीक है, that is why it cannot form hydrogen bond. That उसी की वजह से क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट इनका कम हो जाता है. ठीक है, सो एब्सेंस ऑफ कैनॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, एब्सेंस ऑफ NH, दीज आर द करेक्ट आंसर्स, है ना. ये आप आंसर कीजिए. उसके आगे फिर आप आंसर कर सकते हैं, बट 1-degree अमीन इट हैज 2 हाइड्रोजन एंड दैट्स व्हाई दे कैन फॉर्म, दैट इज व्हाई दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स, है ना. एंड दैट इज आल्सो व्हाई द रीजन इज ये जो सॉल्युबिलिटी होती है ना, solubility जो होती है that is highest for 1-degree amine, then for 2-degree amine, and then 3-degree amines are very very less soluble because hydrogen 1-degree amine जो होता है इसके पास, हाँ ये सही है, फिर intermolecular hydrogen bond is present in primary amines but not in tertiary amines. Yeah, that is correct. उस तरह से आप आंसर कर सकते हैं. ये आपको बोलना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 3-degree amines cannot form hydrogen bond. ठीक है, this is more important to say. Solubility में रीजन क्या हो जाता है that the 1-degree amine it has 2 hydrogen, इसके पास एक हाइड्रोजन होता है, that means 2 hydrogen can be involved in hydrogen bonding. Here there are only 0 hydrogen, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो ही नहीं सकता है. ठीक है, तो since it is having 2 hydrogen atoms, that is why it is more soluble. I think there will be some questions regarding this also. हाँ, बट एक चीज आप देखिएगा कि मतलब सिमिलर सवाल है, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज है ना, तो सारे अगर क्वेश्चन आया है तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है सब जगह. अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी. So this is benzene and then you have NH2. This is C2H5 whole twice NH and this is C2H5 NH2. ठीक है, तो सबसे ज्यादा यहाँ पे किसका होगा, सबसे, if I call this as A, this is B and this is C. ठीक है, तो सबसे ज्यादा यहाँ पे होगा C वाले का. Why C? Because C is primary amine और primary amine के पास क्या होते हैं, there are 2 hydrogen which are bonded to nitrogen atom. That is why C will be having the highest solubility. Now this C, उसके बाद आपके पास होगा B वाला, this is highest, and उसके बाद B आएगा. Now why B is having only 1 hydrogen. ठीक है, और यहाँ पे तो 2 हाइड्रोजन है, but C6H5 is what, it is quite large. ठीक है, due to its larger size it is having what, it is having lower solubility. So सबसे कम solubility किसका होगा, A वाले का होगा, है ना. We have written that anilines are less soluble because of the bulky benzene ring. Ethyl amine is soluble in water whereas aniline is not. The reason is due to bulky benzene ring. Due to bulky benzene ring. ठीक है, and it is not soluble. Ethyl amine soluble क्यों है, क्योंकि because it is having hydrogen bond. Increasing order of solubility, so if I call this A, B and C, so CH3, B will be having the greatest solubility followed by A and then followed by C. Increasing order of boiling point में hydrogen bond देखना रहता है, so boiling point के लिए आपके पास C will be the highest followed by 1 hydrogen bond in A and then you will have the B which is having no hydrogen bonds here. ठीक है, so this is for 27th, this is 26th और this is 25th. चलिए, अब इसके बाद आएगा आपका, इसके बाद आएगा केमिकल रिएक्शंस. ठीक है, पिछले साल अमीन से असर्शन रीजन के बहुत सारे सवाल थे. तो you have C2H5NH is more basic than C2H5 whole thrice N in aqueous solution. ठीक है, तो अगर आप लोग को बेसिक नेचर थोड़ा सा याद नहीं है तो हम बेसिक नेचर के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं आप लोग को. तो बेसिक नेचर में हमारे पास कॉन्ट्राडिक्टरी रिजल्ट्स आ रहा था, इफ यू गाइस रिमेंबर.
we're getting conflicting results, and that is why we relied on experimental data. Experimental data said that कि 2 degree amines are going to have the highest basic nature, and उसके बाद 1 degree 3 degree depending on ethyl है या methyl है, but 2 degree का सबसे ज्यादा है. And then you have the other amines 1 degree और 2 degree. amines के बाद है आपके पास ammonia NH3, and then you have the aniline. aniline में पंगा ये हो जाता है that aniline it is having double single double, and then you are having NH2. Here you have lone pair electrons, and this lone pair electron is delocalized. It is not available for what, for the basic nature. अच्छा, if you have methyl, you can have methyl substituent and you can have ethyl substituent. ठीक है, जब methyl substituent होता है then 1 degree is ज्यादा basic than 3 degree, and जब ethyl होता है तब 3 degree ज्यादा basic than 1 degree. ठीक है, but you don't have to, मतलब अभी आप उतना ज्यादा याद मत कीजिए, तो एग्जाम के एक दिन पहले बस रिवाइज कर लीजिए. राइट नाउ व्हाट यू शुड रिमेंबर इज 2 डिग्री अमीन का सबसे ज्यादा है, उसके बाद फिर 1 डिग्री और 3 डिग्री आएंगे. जनरली या तो 1 डिग्री देंगे या तो 3 डिग्री देंगे ना, दोनों बहुत कम देते हैं. उसके बाद अमोनिया आएगा, एंड द लीस्ट बेसिक इज एनिलीन. एनिलीन इज वेरी लेस बेसिक. नाउ एनिलीन की बेसिक नेचर जो है ना, दैट कैन बी इंक्रीज इफ यू हैव इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स ऑन, सॉरी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स ऑन इट. ठीक है, अगर आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स को ऑर्थो और पैरा पोजीशन में लगाते हैं तब इसकी बेसिक नेचर बढ़ जाएगी. एंड इफ यू आर हैविंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इन द ऑर्थो और पैरा पोजीशन, देन इसकी बेसिक नेचर घट जाएगी. ठीक है, सो आई होप यू गाइस गॉट सम आइडिया, है ना, थोड़ा सा आप लोगों को रिवाइज हो गया हो. Now, the question is saying C2H5NH. You have one hydrogen, that means it is 2 degree, is more basic than, obviously 2 degree सबसे ज्यादा basic होता है, तो this statement is true. Then they are saying in C2H5 voltwise NH there is more steric hindrance and plus I effect than C2H5NH3. अब ध्यान दीजिए जरा, ये statement क्या है. Reason is saying that nitrogen which is having 3 bonds, इसमें क्या आपके पास C2H5 इधर से है, C2H5 इधर से है, and then you are having hydrogen. और जो 3 डिग्री वाला है उसमें ऑल ऑफ दी बॉन्ड्स आर विद C2H5, C2H5 एंड C2H5. अब यहां पे आप बताइए इन द ए स्ट्रक्चर और बी स्ट्रक्चर विच इज मोर हिंडर्ड, ए और बी. सिर्फ स्ट्रक्चर देख के बताइएगा, डोंट रीड एनीथिंग. ए और बी विच इज मोर हिंडर्ड. यस, करेक्ट है. बाकी लोग जल्दी आंसर करना, दिस वेरी इजी, वेरी इजी. ज्यादा हिंडर्ड कौन है, ए और बी, विच इज मोर हिंडर्ड. यस, वेरी गुड. और अब कितने आसानी से आप लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया. until unless you draw these steps ना, कई बार ऐसा होता है if you are just reading the question तो आपको समझ में नहीं आएगा. so what you need to do, जो भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको आप अपने हिसाब से स्ट्रक्चर में बना के देखिए, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा. ठीक है, so they are saying that in, रीजन क्या कह रहे हैं, रीजन कह रहे हैं कि in C2H5NH2 that is my A structure there is more steric hindrance and plus I effect than C2H5 whole thrice N. तो इनका कहना है कि इसमें ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है, एंड विच इज व्हाट, फॉल्स स्टेटमेंट. सो आपके पास जो रीजन स्टेटमेंट है, जो रीजन का जो स्टेटमेंट ही है, दैट इटसेल्फ इज फॉल्स. दैट इज व्हाई द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी. assertion is true, reason is false. Make sense everyone? Yes or no, please tell me. बात समझ में आ रही है? हाँ जी बताएं. गॉट दिस एवरीवन? ठीक है. ठीक है, assertion रीजन क्वेश्चंस ना आप लोग को प्रैक्टिस अच्छे से करना होगा, छोड़ के मत जाइएगा. ठीक है ना, बिकॉज इफ यू आर गोइंग टू लीव assertion रीजन क्वेश्चंस तो फिर वहां जाके फंसिएगा, क्योंकि वर्डिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन assertion रीजन क्वेश्चंस. चलिए, आई हैव अ क्वेश्चन राइट नाउ. चलिए खैर, देखते हैं कितने लोगों को ये चीज याद है. ओ, कैन यू रिपीट फादिल, विच पोर्शन. यस फादिल, क्या रिपीट करें हम. कैन यू प्लीज टर्न योर माइक ऑन. सर दी assertion. What do you want me to answer? Why reason is false, या how I concluded that the C option is the correct option? क्या पूछना चाह रहे हैं फादिल? Can you please turn your mic on? How did we conclude? देखिए, assertion को हमने true रखा, reason को हमने false रखा, और C option में assertion is true but reason is false. Got it? ठीक है. चलिए, moving on.
32 नंबर क्वेश्चन। ये दिस इज कंप्लीटली फ्रॉम द मेमोरी, है ना। अगर आपको याद है तो फिर आप लेकिन थोड़ा लॉजिक से भी आप यहाँ पे आंसर कर सकते हैं, है ना। थोड़ा लॉजिक से आंसर कर सकते हैं। आई विल गिव यू गाइस 30 सेकंड्स। क्वेश्चन को पढ़िए, ऑप्शंस को देखिए, एंड एटलीस्ट ट्राई टू एलिमिनेट, एक एक करके कुछ ना कुछ आप एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए, आई एम गिविंग यू इन 30 seconds फॉर दिस। 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Okay. I have got only one. Okay, fine. I have got two answers. If anyone can reply, tell me कौन सा ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। क्या ख्याल है आप लोग का? Did you were you able to eliminate any one of the options also? Okay, fine. Yeah, the correct option is option number A, that is C6H5NC. एंड देखिए आप ना यहाँ पे दो ऑप्शन बहुत अच्छे से एलिमिनेट कर सकते थे। देखिए, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। आपके पास स्ट्रक्चर क्या है? C6H5NH2। फाइन, देयर इज लोन पेयर और यहाँ पे आपके पास रेजोनेंस है। दैट मीन्स दिस इज अ पार्शियल डबल बॉन्ड। एंड व्हेन यू हैव पार्शियल डबल बॉन्ड, इसका मतलब ये होता है दैट दिस बॉन्ड कैन नॉट बी ब्रोकन। यानी कि इन द प्रोडक्ट देयर शुड बी बेंजीन रिंग, in the product there should be benzene ring which is connected to nitrogen atom, also. See, double bond can be broken, partial double bond can be broken if you have drastic condition, high temperature high pressure वाले cases में होता है, but there is no high temperature high pressure वाला case, right? So we can इतना तो आप assume कर सकते हैं that double bond, partial double bond will not be broken, whatever be the compound, whatever be the answer, it will be having benzene ring that is directly bonded to nitrogen atom, ठीक। तो उसके वजह से आपके पास दो ऑप्शन यहाँ पे खत्म होते हैं, बिकॉज हियर यू आर हैविंग C6H5CN, कार्बन इज कनेक्टेड टू नाइट्रोजन, तो यहाँ पे बीच में कार्बन कैसे आ सकता है? ये बॉन्ड टूटा होगा, एंड दिस सी ऑप्शन कैन नॉट बी ऑल्सो करेक्ट, ये भी करेक्ट हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो एटलीस्ट दो ऑप्शन ऐसे थे जो आप क्या कर सकते थे? कट कर सकते थे। फाइन, अब उसके बाद लाइक ए और डी बचता आपके पास। तो नाउ द, अगर आप तुक्का ही मार रहे हैं, बिकॉज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, यू विल अटेम्प्ट ऑल दी एमसीक्यूज, है ना। इतने भी एमसीक्यूज आप सारे अटेम्प्ट तो करेंगे। नाउ योर परसेंटेज हैज इंक्रीज टू 50%, प्रोबेबिलिटी जो बढ़ गई है वंस यू हैव डिलीटेड टू ऑप्शंस, है ना। चलिए, अब थोड़ा सा अगर आप इधर उधर की चीजें आपको अगर याद हो, देन CH3 ऐड होना, दैट मींस इट इज व्हाट? इट इज अल्काइलेशन। अल्काइलेशन जो होता है दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ RX ओनली, alkyl halide, and here we have chloroform, है ना। ये ऑप्शन करेक्ट है, इट इज कार्बाइल अमीन रिएक्शन। इफ यू guys remember, it is going to give you a very pungent smell. It is used for the detection of 1 degree. It is used for the detection of 1 degree amines. ठीक है, चलिए, write the 33 number question. What should be the answer for 33? Out of the following, strongest base in aqueous solution? अरे जल्दी करें भाई, 33 number questions. I need answers. Strongest base. Yes, Iram, correct. Yusuf. Okay. Yes, Deborah, correct. Okay, fine. 30 more seconds. 30,
29, Yes, Mariam. 28, 27, 26, Yusuf, please see once 25, again. 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, Yes, 9, Shahid. 8, Correct. 7, 6, No, Yusuf. चलो ठीक है Yusuf. 4, 3, Fine. 2, 1. It seems like आपने आज रिवाइज करके नहीं आए हैं आप. अभी तो हम लोगों ने बताया था ना 2 डिग्री सबसे ज्यादा होता है बेसिक. ठीक है. तो methylamine is what it is 1 degree. Dimethylamine is 2 degree. Trimethylamine is 3 degree. Aniline तो ये होगा ही नहीं because it is even less basic than ammonia. तो correct option is the B option. 2 degree amine is going to be the most basic. Basic strength में you have a lot of questions. ठीक है. बेसिक नेचर में you write this. ABC and ABC है ना. I hope इतना आप लोग कर लें. This is A, this is B, and this is C. A, B, C. A, B, C. Here you have this is A, this is B. Give reason सवाल है ये तो इसमें A B क्या ही करे. And here also you have A, B, C, and D. ठीक है. 34 से start करें. Write the question number as well as the answer. Okay, I've got two answers. Okay, Ram, please give the question number. या तो 1 डाल दे या 34 डाल दे 35. Like, please have write the question number also. हाँ ठीक है fine. Yes, correct. Iram, Shahid, and Mariam Khatu. Very good.
30 more seconds and then I will explain it. 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Here guys, actually. Okay, the decreasing order of basic strength, again, mainly you have to understand the 2 degree one. 35, 34, आपके पास क्या है? You have यहाँ पे आपके पास देखना आपको, this is here you have methyl, ठीक है? Methyl substituent. So methyl substituent में what is the order? सबसे पहले तो 2 degree होगा, 2 degree, then you have 1 degree and then you have 3 degree, ठीक है? Then you have, in this case you have A, अच्छा यहाँ पे फिर order क्या हो जाएगा? Order is going to be 34th के लिए order होगा B, then C and then A, right? B, C, A, ठीक है? 35th के लिए order. So C6H5NH2 aniline है, and then you have one, अच्छा ये यहाँ पे आपके पास क्या है? Here you have CH3 whole thrice, तो यहाँ पे आपके पास है C2H5NH2. Now here there is, अब यहाँ पे आप क्या कीजिएगा? यहाँ पे आपके पास मिथाइल है और यहाँ पे आपके पास इथाइल है, and here you have C6H5NH2. दो हजार 19 का सवाल है. Okay, these questions are not right. Fine. So decreasing order सबसे कम तो आपके पास A हो जाएगा, that is for sure because it is phenylalanine. Now we have to compare regarding B structure and the C structure. B is 3 degree and C is 1 degree. And here it is methyl. Methyl के केस में 1 degree is more and 3 degree is less. और ethyl के केस में क्या होता है? 3 degree is more and 1 degree is less. तो यहाँ पे थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा. Just give me a second. Methyl के केस में we have 2 degree, अच्छा 1 degree and 3 degree. Ethyl के केस में we have 2 degree and then we have 3 degree and then we have 1 degree. यहाँ पे you can't do much. You have to 2 डिग्री. अब इसमें पीके भी देख के आंसर करना पड़ेगा. दिस वाज नॉट अ गुड क्वेश्चन, ठीक है? होपफुली ऐसा सवाल ना आए. फिर आपको रटना पड़ेगा, पीके भी रटना पड़ेगा, बट दैट्स नॉट व्हाट इज जनरली एक्सपेक्टेड. होपफुली यहाँ पे व्हेन यू आर हैविंग C2H5 इथाइल ग्रुप में 1 डिग्री, इथाइल ग्रुप का 1 डिग्री एंड मिथाइल ग्रुप का 3 डिग्री. So if I compare 1 degree will be having a lot of hydrogen bonds, so solvation यहाँ पे ज्यादा अच्छा होगा. So hopefully A will be the least, and after that you will have the 3 degree, that is the B structure, and after that you will have the 1 degree, that is the C structure. So this will be the increasing order में है, ठीक? With the decreasing order, fine. अच्छा, तीसरा जो केस है ना, that is more important. ये आप लोग को ध्यान से देखिए. Arrange the following in increasing order of the base strength in gas phase. When you have gas phase, तो वहां पे आपके पास steric effect consider नहीं किया जाता है, because in gaseous phase you are talking about you are only talking about the basic strength in terms of Lewis base electron density के ऊपर. You are not attacking any H plus ion, ठीक है? तो जो यहाँ पे basic strength की बात हो रही है, that is base. Lewis base में क्या देखा जाता है? The electron pair कितनी आसानी से it can donate electron pair. So in the gas phase system, 36 number question, gas phase में 3 degree is most basic, followed by 2 degree and followed by 1 degree. ठीक है? क्यों 3 degree is most basic? Because electron donate करने की सबसे ज्यादा capacity इसी में होती है. Aqueous phase में you have to attack on H plus ion and then you have to form, act as a base. Gas phase के अंदर you are only looking at the base strength according to the electronics.
यहाँ पे आपके पास A will be the most basic, followed by C and then followed by B. ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा लिख लीजिएगा, ठीक है। 2019 was a exceptional year जहाँ पे all of these questions are not according to what CBSE has asked initially, है ना। CBSE ने उसके बाद फिर ऐसे सवाल और नहीं पूछे कभी भी। सही। Give reasons CS3 whole twice is more basic than CS3 whole thrice in aqueous solution. So what will be the reason here? CS3 whole thrice twice is more basic than CS3 whole thrice in nitrogen in aqueous solution. तो इसका आंसर होगा CS3 whole thrice N is sterically hindered. ठीक है। While CS3 whole twice NH is not. एक तो आपके पास ये रीजन हो गया है ना। एंड देन यू कैन हैव regarding the solvation effect also due to solvation effect because when hydrogen H2O is present और उसमें आपने कोई आयन बनाया है तो हाइड्रोजन दे सराउंड द आयंस with H2O molecules and वहां पे सॉल्वेशन होता है and solution leads to more stability. Next we have arranged the following in the decreasing order of basic strength. So here we have methyl आपके पास 1 degree 2 degree 3 degree and then we have NH3 that is ammonia. So here 2 degree will be most, then followed by methyl 1 degree and then 3 degree and then NH3. So this will be the order. Now basic strength में I hope you have done enough. Not so enough. एक और सवाल देख लीजिए जरा। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ एनिलीन पी नाइट्रो एनिलीन। अब ये आप लोग को पता है नहीं पता है। पी टॉल्यूडीन aniline is NH2. P nitroaniline, I hope you can make it. NH2 and in the para portion you have NO2. Toluidine क्या है आपके पास? We have NH2. Tolu अगर याद हो आपको toluene जो होता है CH3 ग्रुप होता है, राइट? तो CH3 is here. Now this is zero, neither plus m minus nor minus m. This is minus m. This is plus m. ठीक है? तो if I write A, B and C, we know that the basic strength it is directly proportional to electron donating group and it is inversely proportional to electron withdrawing group. That is why the most basic is going to be C, which is having electron donating group, followed by A, which is not having any of these, followed by B, which is having an electron withdrawing group. So this will be the order of basic strength. हाँ सही है, सही है, correct. Now moving on to a few reactions. So these are the questions asked in this year examination. 2 marks में. Brief carbylamine reaction, Gabriel salamide synthesis. So these reactions you have to practice. Name reaction के लिए तो practice कीजिए ना, उसके लिए तो बोलना नहीं पड़ना चाहिए. सारे name reactions important है. You have to practice according to the chapters. Chapter wise practice कीजिए. Draw the Zwitter ion structure of sulfonilic acid. This is a question that you मतलब generally people don't expect this type of question है ना. But ये आसान सवाल है. Hard सवाल तो है नहीं. सल्फोनिलिक एसिड का आपको क्या बताना है Zwitter ion structure. So सल्फोनिलिक एसिड क्या होता है? You have benzene ring. You have NH2, you have here SO3H. This is basic in nature, NH, and this hydrogen is acidic, and that is why you get a Zwitter ion form, जहाँ पे the lone pair of NH2, it attacks on the hydrogen atom and it forms NH3 positive, leaving the sulfonilic acid SO3H as SO3 negative. So Zwitter ion में positive, negative दोनों charges होते हैं. This is the Zwitter ion form. Now, how can the activating effect of NH2 group in aniline can be controlled? Simple answer is by acetylation of aniline. By acetylation of aniline.
ठीक है। और इससे पूछा लाइक यू कैन एक्सप्लेन इट फर्दर मोर बाय एसिटाइजेशन ऑफ एनिलीन यूजिंग एसिटिक एनहाइड्राइड। आप रिएक्शन भी शो कर सकते हैं दैट यू हैव बेंजीन रिंग व्हिच इज हैविंग NH2 and you are going to use C double bond O, C double bond O, and you will be getting NH C double bond O CH3. ठीक है. So all of these things you can show. Actually, moving on to some other questions. अगेन बेसिक स्ट्रेंथ पे बहुत सारे सवाल 21 में है, 2014 में है, एंड देन वी हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम 2021 दैट इज केस स्टडी वाला. ठीक है. सो आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू द होल ये थिंग कि क्या बोलते हैं व्हाट इज द टेक्स्ट ऑन द केस बेस्ड स्टडी. आपको मिलेगा सिर्फ सवाल. चलिए, देयर आर अ फ्यू क्वेश्चंस. केस स्टडी बेस वाले भी जनरली विदाउट केस स्टडी भी हो सकता है. ओके. पहला, ethyl amine can be prepared by the action of lithium aluminum hydride on. क्या बनाना है आपको? इथाइल अमीन. दो कार्बन आटम. दो कार्बन आटम कहाँ है? यहाँ पे एक कार्बन है, हो ही नहीं सकता. यहाँ पे दो कार्बन है, ये हो सकता है. यहाँ पे एक ही कार्बन है, CH3N है, यहाँ पे नहीं होगा. CH3 CH2 CO NH2, यहाँ पे तीन कार्बन आटम है, LiLH4 यूज करके नहीं होगा. सो दी ओनली ऑप्शन इज बी. ठीक है. इथाइल अमीन कैसे बनेगा? इनमें आप LiLH4 डालिए, यू विल गेट इथाइल अमीन, टू कार्बन एटम्स एंड NH2. Which of the following reagent is used for the Hinsberg test for amines? Hinsberg test for amines है ना. Hinsberg test of amine, amines का टेस्ट होना है ना. Which of the following reagent, अच्छा reagent पूछा है वहां पे. reagent क्या होता है Hinsberg reagent? D. हाँ, D करेक्ट, वेरी गुड. ठीक है. It is aryl sulfonyl chloride. You have aryl sulfonyl chloride. Benzene ring SO2Cl. आउट ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इन एक्वस सोल्यूशन. एक्वस सोल्यूशन में सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? 2 डिग्री. 2 डिग्री कौन सा है? ए ऑप्शन. ठीक है. बहुत जल्दी फटाफट आंसर आना चाहिए. द रिएक्शन ऑफ अमोनिया विथ लार्ज एक्सेस ऑफ CH3Cl. अब ध्यान दीजिए, ये इंपॉर्टेंट सवाल है. ठीक है. रिएक्शन ऑफ अमोनिया विथ लार्ज एक्सेस ऑफ, यू हैव NH3 और उसके बाद आपके पास क्या है? यू हैव CH3Cl. ठीक है. एंड CH3Cl बहुत है, बहुत ज्यादा CH3Cl है. ठीक है, बहुत ही ज्यादा. अगर आपके पास बहुत ही ज्यादा CH3Cl है तो क्या होगा? पहली बार रिएक्शन हुआ NH3 के साथ और आपको क्या मिला? यू विल गेट CH3NH2. अब भी यू विल स्टिल हैव सम CH3Cl रिमेनिंग बिकॉज CH3Cl क्या है? एक्सेस में है. तो इट इज गोइंग टू गिव यू व्हाट? वंस अगेन CH3N, फिर उसके बाद CH3 और एक हाइड्रोजन. CH3Cl अभी भी बहुत एक्सेस में, तो फिर से रिएक्शन हो सकता है. दिस नाइट्रोजन एटम कैन अगेन अटैक एंड यू विल गेट CH3N, CH3 and CH3. Still having lone pair, so it can again attack and it is going to form nitrogen which is having CH3 whole 4 and a positive charge, quaternary ammonium salt. ठीक है. तो ऑप्शन नंबर सी होगा. शाहिद ने एक्सेस देखी है, ये लिख दिया सीधा सीधा. बट दिस इज अ गुड थिंग ऑफ डूइंग क्वेश्चंस, राइट शाहिद? है ना. डी ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन सी होगा. ठीक है. सिर्फ एक्सेस देख के आप ये मत कीजिएगा. देखिए व्हाट इज एक्सेस. सो इफ यू रिमेंबर, हमने कहा था अमोनिया अगर एक्सेस में होगा तो अमोनिया एक बार रिएक्ट करेगा, सारे के सारे CH3Cl यहीं पे खत्म हो जाएंगे. ठीक है. इफ अमोनिया इज इन एक्सेस, अगर अमोनिया एक्सेस में हुआ देन ऑल द CH3Cl विल बी ओवर इन द स्टेप. अब आफ्टर दिस स्टेप देयर विल बी नो CH3Cl लेफ्ट, ओनली अमोनिया इज लेफ्ट. अब अमोनिया अमोनिया में क्या ही रिएक्शन. ठीक है. Which of the following amine is expected to have the lowest boiling point? Boiling point सबसे कम कहाँ पे होगा? जिसके पास हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है. That is the B option है ना. यहाँ पे there is no NH bond, वहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा. ओके. सो केस स्टडी बेस वाले जनरली आपको इजी ही मिलेंगे, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं मिलेगा. ठीक है. Now we have another question. This is from carbyl amine reaction. इसके लिए तो 30 seconds. 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18,
17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Okay, I've got 3 answers. Okay. All of you are doing it correctly. That the correct option for here is going to be you have benzene ring, और फिर उसके बाद आपके पास है CH2, तो एक CH2 NCB option is correct. Yeah, very nice. चलिए, now looking at some other questions. Okay. Let us see. ये सवाल आप लोगों से हो पाता है या नहीं? Structure of A and B in each of the following. I think you'll have to send the answers on by WhatsApp. Okay, guys, चलिए 30 more seconds. 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Okay, आंसर कोई भी नहीं आया. अच्छा, एक दो आंसर आया. आंसर आया. आंसर. Mariam has sent one answer. Draw the Zutra. अच्छा, 64, 62. Okay. Yes, very good. बहुत बढ़िया. Iram has sent answer. Yes, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. Very nice. सेकंड वाला भी सही है आपका. वेरी नाइस. ठीक है. मरियम, रिवाइज करके आए हैं आज आप? Yes. फर्क दिख रहा है आपको? Yes. है ना? रिवाइज करके आइए, तभी आपको समझ में आएंगी चीजें. यहाँ कंसंट्रेटेड H2SO4. आई थिंक योर आंसर आया, आपको यही देख लीजिए. कॉन्क H2SO4.
you'll have NH3 positive or HSO4 negative, right? Once you heat it, you will get सल्फोनिलिक एसिड NH2 और यहाँ पे आपको मिल जाएगा SO3H। इसके बाद आप इसका ज़ोट्रायन भी बना सकते हैं, बट नॉट वेरी मच रिक्वायर्ड। यहाँ पे आपके पास you have amide CONH2, इसमें you have the bromide degradation Br2 in the presence of NaOH, तो आपके पास CO निकल जाएगा, क्या बचेगा? NH2 बचेगा। And then you have anhydride in the presence of pyridine. This is going to give you acetylation reaction, है ना? N है, H लग जाएगा, C double bond O and CH3, ठीक है? This is the compound C double bond O in the presence of pyridine. चलिए इसके बाद थोड़ा सवाल देखते हैं उसके डाइसोनियम सॉल्ट वगैरह, है ना? एंड लेट अस सी इफ यू हैव सम डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। एबीसीडी टाइप ऑफ क्वेश्चन तो ये हम लोग कल करेंगे। आई मीन डाइसोनियम सॉल्ट में ये है ना कि मतलब सवाल तो आसान, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं रहते हैं। जैसे ये सवाल है, इस साल आया था, कंप्लीट द रिएक्शन विद मेन प्रोडक्ट फॉर्म। You guys remember, you can answer it in the Zoom chat itself. Yes, you're correct, Shaviz. Yes, correct, very good. ठीक है, सो इथेनॉल से जब ये रिएक्ट करता है, देन इट फॉर्म्स बेंजीन, दैट इज द मेन प्रोडक्ट। साथ में आपके पास यू गेट एसिटाल्डिहाइड आल्सो, बट दैट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। बेंजीन आपका मेन प्रोडक्ट है जो कि आपको मिलेगा। And any more reactions? अब एबीसीडी टाइप वाले जो रिएक्शंस है वो तो हम लोग कल करेंगे ही, बट आई डोंट सी एनी मोर। डाइसोनियम सॉल्ट के हैं कुछ रिएक्शंस। चलिए एक सवाल है आपके पास, ऑप्शन है इसके लिए। In cold conditions, aniline is diazotized and then treated with aniline again to give a color product. The structure of colored product is, ठीक है? तो अगर याद है आपको तब तो आंसर आसान है, but if you guys don't remember, तो you have to work with the question that is given. So you have aniline is diazotized and treated with aniline again, ठीक है? तो aniline से ये reaction हो रहा है, fine. So you should have some like aniline वहां पे होना जरूरी है ना? और diazotized
is diazotized and then treated with aniline again to give a colored product. So you will should have N double bond N एक तो होना चाहिए because there is diazotization, and after that you should also have aniline NH2 present because आपके पास next reaction aniline के साथ हो रहा है. ठीक है. So if you see here, what should be the correct option? Let me see. ठीक है, दो लोगों का correct option आ गया है. Yes, B is the correct option. Very good. ठीक है. तो आपके पास डायazotization भी है और यहाँ पे इट इज रिएक्टेड विद aniline, तो वो भी आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि NH2 है. ठीक है. ये ऑप्शन हो नहीं सकता बिकॉज यहाँ पे NH आ रहा है. इट शुड बी रादर N डबल बॉन्ड N. यहाँ पे इफ द रिएक्शन इज हैपनिंग विद फिनॉल तब ये होता है. चलिए. सो फॉर द नेक्स्ट, अब आई सी दैट थोड़ी अटेंडेंस कम हो चुकी है एंड आई गेस दिस इज बिकॉज क्लासेस खुल चुके हैं, स्कूल आप लोग के ओपन हो चुके हैं. सो कैन यू गाइस टेल मी व्हेन आर योर क्लासेस स्टार्टिंग? डेबोरा, नेक्स्ट वीक ना? डेबोरा फॉर यू. Yes, sir. Iram, what about you? Next week means Saturday? 8th of Jan, Monday. अच्छा, आपका 8 of Jan, Monday. डेबोरा, अच्छा टेल मी इन चैट, अभी बार चैट में टाइप कर दें आपका स्कूल कब खुल रहा है. गिव मी द डेट. नेक्स्ट वीक फ्रॉम संडे, दैट मींस 7th Jan. ओके. शाहिद का भी 7th Jan आई गेस. इरम एंड शावेज वेटिंग फॉर यू. इरम आपने 8th बताया, राइट? ठीक है. From next week, Chavez. Next week means what? 6th Saturday or Sunday? 6th or 7th? Yeah, Monday. Sunday 7th से start हो रहा है. Okay. So I think mainly Thursday. Sorry? So I think mainly Thursday start हो. 4th of Jan. Thursday. Not 4th. Next week Thursday. 11th. Maybe. Yeah. अच्छा, ठीक है, फाइन. तो आप जो आ रहे हैं आप लोग का भी फाइन. ठीक है. लेट मी आल्सो, आई विल पुट अप अ पोल इन द ग्रुप. ठीक है. सो दिस आई विल कंटिन्यू दिस क्लास. बाकी जो बच्चे एटलीस्ट टिल सैटरडे आई विल कंटिन्यू बिकॉज सैटरडे तक का ही हम लोग के पास शेड्यूल है. दैट 2nd Jan, Amines, we are done. Tomorrow we'll be doing the ABCD type of questions. 4th January ko we will be doing organic conversions, and 6th January ko we will be doing all the chemical tests, है ना?